हाँ, एक्सपेरिमेंट नंबर 7। ठीक है, मैंने एक टेंटेटिव लेआउट डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। नेक्स्ट वीक आप लोगों की लैब की इवैल्यूएशन है, वाइवा है, और उसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 4, 7 और 8 के साथ साथ आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 भी इंक्लूड है। Because last time when I have checked your experiment number 1 and 2, I have only marked you for the manual. आप लोगों का वाइवा नहीं हुआ था, so please make sure next week से आप लोगों की evaluation है, and that will be covered in 2 halves. तो नेक्स्ट वीक आपकी क्लास का एक हाफ वाइवा देगा और उससे नेक्स्ट वीक जो है सेकेंड हाफ वाइवा देगा। ठीक है, तो दैट इज द रीजन वी आर कवरिंग 2 एक्सपेरिमेंट्स इन टुडेज लैब। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 और 7 हम लोग आज ही कवर करेंगे। ठीक है, तो experiment number 4 is to perform the experiment on the Pelton wheel and hence to plot its statistical curve. The apparatus which is required to perform the experiment, that is Pelton wheel, weight, charge measuring tank, tachometer and stopwatch. So in this figure you can see that this is the Pelton wheel, these are the weights. You have the discharge measuring tank over here, this is the tachometer, and further you will have the stopwatch. And the relevant theory, we have to basically review the working of the Pelton wheel. You know this already. हम लोगों ने इसको थ्योरी में डिस्कस किया है. You have also covered this in the lab as well. आप लोगों ने जहाँ पे मशीन की स्टडी की है, you have covered its working. First हम review कर लेते हैं that in the case of the impulse turbine, and this particularly over here the Pelton wheel, a nozzle is provided at the end of the penstock. The water will leave the nozzle in the form of the jet, and it will impact the force on the buckets of the runner, and due to that force the runner will rotate, which gives the idea that mechanical energy has been induced in the runner. That mechanical energy is transferred to the shaft, and from the shaft it is transferred to the other component. लैब के अंदर आपने शाफ्ट को फर्दर कनेक्ट किया हुआ है विद द ब्रेकिंग ड्रम, while in the field this shaft is further connected with the generator. Okay. Now further you have the spearhead needle inside the nozzle. This needle can move axially in the forward and backward direction, and due to its movement the flow rate of the jet can be controlled. Okay. अब इस केस में ये देखिए, I have shown that this is the input power. इस मशीन में जो आपकी इनपुट पावर है that is the hydraulic power, and you have to convert that into the mechanical energy. Yes, so input power is in the form of the hydraulic energy. So now we will discuss the formulas for the input and output power. So input power is also termed as indicated horsepower. It is the input power supplied to the Pelton wheel in the hydraulic form. The general formula for the hydraulic power is gamma QH. Now over here, this gamma is a specific weight of the water. It will vary with the temperature. You will note down the temperature initially, and for that temperature, this gamma will be constant for your set of observations. So it's a discharge through the nozzle. जो measure करने के लिए you will simply use the relation of volume and time. Okay, and for this you can see this figure. You already know that turbine is not using the amount of the water; it is only using the energy of the water. So once that has struck on the buckets of the runner, it will leave the runner casing to the tail race channel, and in the lab you are collecting that water into the collecting tank. ठीक है, आप उस टैंक में वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं. You know the dimensions of the tank, that will give you the volume.
You will note down the time of the collection which is required to fill that volume, and their ratio will give you the discharge in meter joules per second. So please make sure that the stopwatch which you will initially required in the operators, that is basically required to note down this time of correction. Okay? So stopwatch आपको basically इस time को note करने के लिए चाहिए जो कि volume को fill करने के लिए required है, and that will give you the discharge ultimately. Further, you have the age value. Now, what is this age? This age is the head available at the base of the nozzle. Please now listen to this carefully. I hope कि आप लोगों को पता है कि नोजल की बेस हम किस सेक्शन को कह रहे हैं. अगर नहीं क्लियर तो थोड़ा सा सुन लें प्लीज. दैट दिस सेक्शन जहाँ से नोजल स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल पेन स्टॉक का एंड, और जहाँ से नोजल स्टार्ट हो रही है, जहाँ से एरिया की कन्वर्जन स्टार्ट हो रही है. ओके, दिस section is basically the nozzle base. Now, theoretically, you are required to attach the bottom gauge at this end. But if you see this figure, you can easily see that the nozzle is inside the casing of the runner. So it is not possible to attach the bottom gauge exactly at the nozzle base. Okay, so इसलिए आपने उस बॉटम गेज को नियरेस्ट टू द नोजल बेस, जो भी आपको लोकेशन अवेलेबल है फ्री, आपने उसको वहाँ पे अटैच किया. Now, secondly, the reading which this bottom gauge will give us, that is not the correct reading because it is a reading at the center of the bottom gauge. You need the reading at the center of the pipe. Either that is the nozzle center or that is the penstock center. तो भी उस पाइप का सेंटर है, आपको उस पे प्रेशर की रीडिंग चाहिए. But the bottom gauge is giving the reading at its center. So what you will do, you have to apply the correction. Now, in this case, the bottom gauge is having the high elevation as compared to the actual point of the center line. It means कि जो pressure bottom gauge इस case में read करेगा, that is less as compared to the actual. Why? Because with the increase in the elevation, the pressure will decrease. So the reading at the center of the bottom gauge is less as compared to the reading at the center of the pipe. So in this case, the error is negative because it is measuring the lesser value as compared to actual. So error is negative and correction will be positive in this case. Now what will be the correction? That is this Z. This is the elevation difference between these 2 points. The point at which you have at which you are actually measuring the pressure. In the difference that is Z. Now be very careful regarding the units in which the gauge is giving you the pressure. If it is giving you the pressure in so initially, when you have not applied any brake, the rotation of the shaft are transferred from. Okay, and it will be that's the way to apply the brake. इस केस में अगर brake हम initially rotate करें in the anti-clockwise direction, then how you will apply the brake? To apply the brake, you have to apply the torque which is in the clockwise direction. ठीक है, तो जो भी एक्चुअल रोटेशन या मूवमेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, that will be basically the mode of applying the brake. अब जितनी ज़्यादा आपको ब्रेक रिक्वायर्ड है उस कंपोनेंट को स्टॉप करने के लिए, बिल्कुल जीरो रोटेशन या जीरो मूवमेंट में लाने के लिए, दैट इज द इंडिकेशन कि आपने उतनी ही ज़्यादा उसकी आउटपुट है. So that is what we are doing over here. That is the way of relating this
brakes with the output power of the turbine. So how you will apply the brake? To apply the brake, you first have to clamp the system over here. जब आप clamping करेंगे, then due to the clamping, the leather brake shoes will come in contact with the braking drum. Okay, now if you have clamped it and the leather brake shoes are in contact with the braking drum, what will happen? This leather brake shoe arrangement will now act as a unit with this braking drum. ये पूरे का पूरा arrangement जो है that will try to move also in the anti-clockwise direction. Okay, अभी सारा जो सेटअप है वो इस ब्रेकिंग ड्रम के साथ एंटी क्लॉकवाइज मूव करने की ट्राई करेगा. अभी तक आपने ब्रेक अप्लाई नहीं की, बट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक इन दिस केस दैट यू हैव टू अप्लाई द टॉर्क व्हिच इज एक्टिंग इन दी clockwise direction. इसके opposite direction में apply करना है. Now to apply that brake, what you will do? You will put the weight in the pan. This W into this lever arm will produce a torque in the opposite direction to the rotation of this drum. Now this is the amount of the brake which you have applied. क्या अब ये ब्रेक आपने वेट कितना रखना है या कैसे चेक करेंगे? For that the spring balance is used. This spring balance basically gives the indication of the movement of this braking arrangement. जब आपने clamping की है और ये सारी arrangement ऊपर की तरफ move कर रही है, that will give you the positive reading of this. That will give you the positive reading of the spring balance. That will give you the positive reading of the spring balance. Now you have to put the weights in the pan by that amount कि ये spring balance जो है उस reading दोबारा से 0 हो जाए. Okay, so this is the way to apply the brake. So please make sure in this case that only clamping the arrangement or only putting the weight in the pan will not apply the brake. Okay, so आपने clamping जब की है साथ आपने उसमें weights भी put करने हैं. So that is the way to apply the brake on the system. You can do the reverse. It means that you can put the weights in the pan first and then you can do the clamping. उस केस में क्या होगा? अगर आप weights पहले place कर रही हैं, that will give you the negative reading of the spring balance. You will do equally clamping so that the system will become balanced. So this is the mode in which you will apply the brake. Now how this applied brake will give you the output power. The output power of the turbine is also termed as brake horsepower. This P naught is brake horsepower. This is 2 pi nt over 60. 2 pi and 60 are constant. N is the revolution per minute and this P is the braking torque. Okay, so this formula will give you the output power of the turbine. Now, what will be the effect of the brake application? Initially, when you have not applied any brake, this P is 0 and this N is maximum. Now, when you start applying the brake, this P will increase and this N will decrease. और जब आपने maximum brake apply कर दी है, at that point, this P will be maximum and this N will be 0. So this is how you will get different points to plot the graph. Make sure in this experiment, अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि input power constant है because the discharge is constant for one set of readings. But for that set of reading, the output is not constant. It will be varying और आप different readings लेंगे कैसे? By applying the brakes in interval. Okay. So this is the way to measure the output power of the turbine. Now, the thing which you have to note down during this experiment, that is the minimum reading of the tachometer which is attached in the machine, in the lab with this machine, that is 600 RPM. अब इसका effect कैसे आएगा? Practically, when you are applying the brake, this N will decrease. और maximum brake जब आपने apply कर दी है, तो ये N जो है that should become 0. Okay, but the minimum reading of the tachometer which is available in your lab, that is attached with the machine, its minimum reading is 600 RPM. It means that if you apply the brake beyond the limit of 600 RPM, आप brake apply कर सकते हैं, ठीक है? But you cannot measure the respective value of them. So there is no use of applying the brake beyond this limit. So in your experiment, you will apply the brake till the N value decreases to 600 RPM. के बाद भी आप ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप उसके रिस्पेक्टिव N की वैल्यू को रीड नहीं कर सकते. So it is of no use क्योंकि वो डाटा इनकम्प्लीट होगा. So you don't need to apply the brake beyond this limit. इसको फर्दर आपने कैसे अकोमोडेट करना है वो भी हम डिस्कस करते हैं. So if you have the output power, you have the input power, their ratio will give you the efficiency. So make sure in this expression the input power is constant, only the output power is varying
फॉर एवरी रीडिंग ऑफ द अप्लाइड ब्रेक, तो उसके रिस्पेक्टिवली आपके पास एफिशिएंसी आती जाएगी. ठीक है. Now next concept is the gate opening. This is very important regarding this experiment. Gate opening is basically the opening of this nozzle in percentage. Okay, and we have already discussed that the opening of the nozzle can be controlled by the movement of the spearhead needle. If this needle is fully moved in the forward direction, the opening will be zero, and if it is moved fully in the backward direction, the opening will be maximum. The discharge will be maximum. Now, in this experiment, you have to perform the experiment for two openings, that is 100% and 50% gate opening. Obviously, at the 100%, the discharge is maximum, and at 50%, the discharge will be half. आपने ये study करना है through the results. What is the effect of the discharge on different parameters of the experiment or of the graph? Okay, so discharge के हाथ करने से कैसे effect आ रहा है वो आपने study करना है. Now, how you will control the opening or the discharge? In the lab, this spearhead needle is having a wheel at the end. The counterclockwise 6 turns of this wheel from the 0% opening. अगर initially nozzle बिल्कुल closed है और आप इस wheel को 6 turn दें in the counterclockwise direction, then you will get the 100% opening. ठीक है. इसी तरह initially अगर वो fully closed है तो 3 turns आप देंगे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, that will give you 50% gate opening. So counter clockwise rotation जो है that is opening the nozzle, and similarly the clockwise movement of the wheel will close the nozzle opening. It will ultimately be zero. Okay? तो आपने एक्सपेरिमेंट करना है 100% और 50% gate opening. अगर आपने 100 से 50% में मूव करना कैसे करेंगे? You will give the wheel 3 turns in the clockwise direction. Okay. Okay, now next is the discussion on the characteristic curves. इसके लिए आप पहले फिगर देख लें. This curve is basically the graph between 4 parameters. Along x you have the value of RPM n, and along y you have 3 parameters. Those are efficiency in percentage, output power in watts, and braking torque in Newton meter. Okay, तो आपने इन तीनों वेरिएबल्स का इफेक्ट स्टडी करना है with the variation in this value of n. अभी हमने क्या डिस्कस किया? Initially, when you have not applied any brake, you will get a maximum. So that is your first point on the graph over here. Then you start applying the brake. उसमें ये देखिए यहाँ पे t भी 0 है. Then you start applying the brake. This t will increase. ये t की कर्व ऊपर जा रही है. This t will increase and this n will decrease. So as we are moving backward, n is decreasing and t is increasing. ये t की कर्व है. Okay. So in your case, you can reduce the n value till 600. So this is the threshold, which is basically the limitation of the tachometer which you have in the lab. So you can see that between 600 and n maximum, all the points are joined with the firm lines. But beyond 600, between 0 and 600, हमने उन्हीं trends को extrapolate किया है, but with the dash lines. These dash lines will basically show that we don't have any experimental points within this range. हमने इन्हीं trends को extend किया है to get over the points over here. इसको आप इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं कि जब आपने मैक्सिमम ब्रेक अप्लाई कर दिया, इट मीन्स दैट व्हेन जो टी इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट एन विल बी 0. अगर एन 0 है तो आपके पास एफिशिएंसी भी 0 है क्योंकि पी नॉट 0 है. ठीक है. सो दैट विल आल्सो मेक एफिशिएंसी. Now the parameters which you will compute from this graph, those are eta maximum. सबसे पहले आपने eta maximum लोकेट करना है. This eta maximum is the maximum efficiency of this Pelton wheel. अब इस efficiency के respective जो speed है, n की value है, that is n naught. Okay, so this n naught is termed as normal speed of the turbine, which is giving us the maximum efficiency. Next, respective to this n naught, find out the value of P naught. इस केस में ईटा मैक्सिमम और P नॉट मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं, दे विल बी लाइंग ओवर ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे इनपुट पावर कांस्टेंट है और एफिशिएंसी डायरेक्टली आउटपुट पे ही डिपेंड कर रही है. तो ये पॉइंट ऊपर नीचे ही होंगे इनके सारे. So respective to n naught, you will also have the point that is P naught. इस केस में P naught और P naught maximum दोनों सेम है. Also respective to this n naught, you will have the normal braking torque, that is P naught.
Further, you will extend this P curve to get this P maximum value. अब इसमें जो एक गलती बच्चे कर सकते हैं, that is the confusion regarding the scale along the y-axis parameter. You have three parameters along y-axis, but please make sure that the origin of all these three parameters are same. इसको आपने याद रखना है कि along y जो तीनों parameters हैं, इनका origin same है. Okay, it means that all the points will meet ultimately at this origin. ये इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज यू आर रीडिंग टेकिंग द रीडिंग ऑफ वन ग्राफ रिस्पेक्ट टू द सेकंड ग्राफ, तो ये तीनों ग्राफ रीडिंग से इंटरलिंक है, तो यू हैव टू कीप द ओरिजिन सेम. इसमें ज़रूरी नहीं है कि तीनों पैरामीटर्स का स्केल सेम हो बिकॉज स्केल्स कैन बी डिफरेंट, तीनों पैरामीटर्स डिफरेंट है. Scales can be different that will ultimately change the position of these curves relative to one another. पॉसिबल है कि जो स्केल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उससे ये अरेंजमेंट है तीनों ग्राफ की. अगर आप स्केल चेंज कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है कि आपकी टी वाली जो कर्व है दैट इज कमिंग बिलो देन दीज टू कर्व, ठीक है, या सिर्फ पावर वाली कर्व आपके ऊपर जा रही है, तो वो डिपेंड कर रहा है इंटायरली आपके स्केल पे. तो दैट इज नॉट अ मिस्टेक. ये जो इनकी पोजिशन है विद रिस्पेक्ट टू द अदर, दैट कैन वेरी बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन द स्केल. अदरवाइज वो गलत नहीं है. बट मेक श्योर ओरिजिन ऑफ ऑल थ्री ग्राफ शुड बी सेम. अगर आपने तीनों का ओरिजिन सेम नहीं रखा देन दैट इज अ ह्यूज मिस्टेक. आप जो भी रिजल्ट इस ग्राफ फाइंड करेंगे वो ठीक नहीं है. ऑल्सो आई हैव शोन दीज थ्री पैरामीटर्स रैंडमली. अगर आप चाह रहे हैं तो आप पी नॉट को यहाँ लिख सकते हैं, आप पी को यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट शोन ऑन स्केल. इन दोनों दो कंसेप्टिव लाइन जो है वाई के लॉन्ग, इनमें डिस्टेंस है, ये ऑन स्केल नहीं है, ये रैंडमली ड्रॉ किया हुआ है just to make the scale easily readable. That's it. Okay, so please make sure these three parameters are not plotted on scale along the y-axis. Means कि जो horizontal listed है वो scale पे नहीं है. आप इनकी arrangement चेंज कर सकते हैं. अगर आप कन्वीनियंट हैं तो आप तीनों पैरामीटर्स एक ही पे शो कर सकते हैं, लेकिन वो तीनों स्केल्स एक एक्सिस पे रीड करना डिफिकल्ट है, तो इसलिए हमने उनको तीन डिफरेंट एक्सिस पे शो किया. दैट्स इट. So this is the characteristic of. So procedure is very simple. Your input power is constant for one gate opening. आपने एक गेट ओपनिंग के लिए ब्रेक्स को इंटरवल्स में अप्लाई करना है. दैट इज अ बेसिक स्टेप इन दिस. उसके लिए आप इस परफॉर्मेंस एक दफ़ा प्लीज देख लें. तो मे बी यू विल नॉट बी एबल टू हियर द साउंड, लेकिन मैंने आपके साथ जो लिंक शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप के थ्रू ड्राइव का, उसमें ये वीडियो सेपरेटली अवेलेबल है, तो यू कैन इजीली हियर द इंस्ट्रक्शंस इन दैट वीडियो. तो फिर अलग आप देख लें.
Okay, so these are the tables for the observations and calculations for both 100% and 50% gate opening. So this is your observed data, and this is mainly for the calculations for both the openings. So make sure you will have two characteristic curves. One is for the 100% gate opening and one is for the 50% gate opening. Okay. So you will find out all the parameters from the graphs for both the openings. आप उन दोनों graphs पे जो readings आपके पास आ रही हैं, you will write them in these tables in columns में लिखेंगे आप. And finally you can do a comparison that what is the effect of the discharge on the different parameters of that machine. And finally you can comment on the results as well. This is the data given to you for the calculations for the both openings, 100% and 50% gate. Okay. This is all. Comment. If you have any questions regarding this, you can ask me right now. Otherwise, I am starting with experiment number 7. उसके बाद फिर अगर कोई क्वेश्चन हैं, then I will take that. Okay. अभी फिलहाल मैं शेयर कर रही हूँ experiment number 7 आपके साथ. So till that time, within 2 to 3 minutes, अगर कोई questions आते हैं, please you can ask them. Class experiment number 7, that is to perform the experiment on the double stage centrifugal pump and hence to plot the statistics out. So more or less the objective is same for both the machines, both the experiments कि आपने दोनों machines के लिए characteristic curves जो है वो generate करने हैं. So the apparatus which is required to perform the experiment, that is a double stage centrifugal pump with the gauges at the delivery and on the suction side, discharge measuring tank, stopwatches, you will need two in numbers over here, and energy meter or watt meter. So ये simple जो meter थोड़ा में लगा होता है, that is termed as energy meter or watt meter. This is the one which is attached with the machines in the lab. Just a basic review that a pump is a machine which is converting the mechanical energy into the hydraulic energy. It is used to move the liquid from one point to another point. It produces the head and flow in the liquid. And particularly the centrifugal pump, it is a pump which is converting the mechanical energy into the hydraulic energy by the action of the centrifugal force, which is produced by the rotation of the impeller. We are having a double stage centrifugal pump, so you can see this cutout of the machine. You can see that this is the shaft, and on this shaft we are having two impellers, which are connected on the same shaft. Okay, so this is the particular layout of the double stage centrifugal pump. So regarding the performance, again we have to find out the input power, the output power, and the efficiency. The input power is again termed as indicated horsepower. This is our pump, and in this case, you are providing the input power in form of the mechanical energy, which is supplied by the motor. Okay, so motor के through आप input power supply कर रहे हैं pump को. The input power of the pump is basically the output power of the motor. And if you know the efficiency of the motor, you can easily find out this output power of the motor with the help of this input power. Okay, तो आप मोटर की इनपुट पावर को उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके मोटर की आउटपुट फाइंड कर सकते हैं. एंड दिस आउटपुट ऑफ द मोटर इज basically equals to the input of the pump. Okay. So this is what is written over here, that input of the pump is basically the output of the motor, which is the efficiency of the motor into the input power of the motor. Now over here, the efficiency of the motor, which is available in the lab, that is 85% or it is 0.85 in fraction. Now the input power of the motor. आपकी मोटर कितनी इनपुट पावर कंज्यूम कर रही है, दैट इज बेसिकली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी मीटर. मोटर की जो इनपुट पावर है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल पावर. कितनी इलेक्ट्रिकल पावर वो कंज्यूम कर रही है, वो यूजेज आप मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मीटर. So respective to this energy meter, the equation for this input power of the motor is 1 over NT1. So what is N?
That is the number of the revolutions of the disk of energy meter for 1 kilowatt hour energy. If you can recall, जो पुराने meters घरों में लगे होते थे, they were having a disk on them, which was continuously rotating. जो नए meters हैं, they are digital meters. They are directly giving you the number of the units. But the older meters were having a disk in them. और एक certain rotations complete करने के बाद जो number of unit है reading में that increases by 1. Okay, so this is basically n over here. That how many rotations are required to cover by that disk, after which 1 unit of the energy is consumed. What is 1 kilowatt hour over here? This 1 kilowatt hour is basically 1 unit of the energy. Now, in your case, the meter which is available in the lab that is having the n value as 30. What does the 30 means? It means that when the disk on the energy meter will cover 30 rotations. After that, you have consumed 1 unit of the energy. Okay, इसी तरह अगर 60 पेशेंट्स आपने कंप्लीट किए किसी भी मशीन के रन में, so you can easily say that you have consumed 2 units of the energy for that particular patient. Respectively, you can go on the lower side as well. This is N. Okay. What is T1? That is the average. T1 is the average time required for one revolution of the disk of energy meter. This T1 is the average time. T1 is the T1 is the average time which is required for 10 revolutions. Okay, so you will measure the time for 10 revolutions and their average will give you 1. Okay, next is simplification. आपके पास जो इनपुट पावर का फॉर्मूला है उसमें आप इन वैल्यूज को पुट करें एंड सिंप्लीफाई दिस. Efficiency is 0.85, n is 30, and it's T1. So after simplification, you will have this equation. This is 102,000 by T1. So in this case, this is the equation for the input power of the pump. T1 is the variable over here. और इस T1 को measure करने के लिए आपको एक stopwatch use करनी है, which will give you the average time for the disk of that energy meter. That is the input power. Now the output power of the pump is the hydraulic power. You are converting the mechanical energy into the hydraulic energy. Hydraulic energy is basically that is measured by gamma QH. So it is also termed as water horsepower, which is P naught for the pump. So same parameters which you have initially. Gamma is the specific weight of the water. It is varying with the temperature. So you will note down the temperature, and for that temperature, this gamma will be constant. What is Q? Q is the discharge. Again, you will measure it by using the volume and time relationship. For that, you will use the charge measuring tank, and it will give you the discharge in meter cube per second. HM, that is the total manometric head developed by the pump. Okay, now you have two gauges. One is on the suction side and one is on the delivery side. You will note down the reading from both the gauges, and after applying the correction, you will add them up and you will get the total manometric head HM. So you will apply the correction on a similar basis जैसे आपने भी पिछले एक्सपेरिमेंट में किया है कि आप जी नोट करेंगे for both the gauges, and you will add them up in the observed reading. That will give you the manometric head on the suction side and manometric head on the delivery side. Their sum will give you the total manometric head HM. Put the values in the formula and that will give you the power in watts. Next, find out the efficiency, that is the ratio of the output and input power in percentage. And finally, you will plot the statistics of. In this case, along y you have the efficiency P naught and manometric head HM, and along x you have the discharge. So you will vary the discharge, and for each value of the discharge, you will note down the value of these three parameters. And that is basically giving you the idea कि आप experiment perform कैसे करेंगे. That's how you will perform the experiment. So in this case, you will control the discharge, which is basically done with the help of the delivery valve. And for each value of the discharge, you will note down the readings and you will plot these graphs. तो सबसे पहले आपने क्या नोट करना है? You will note down the point of eta maximum. आप नोट करेंगे कि eta maximum कितना है.
and respective to the theta maximum, the value of the recharge is Q naught. Q naught is corresponding to the maximum efficiency. It is a normal recharge. Then, respective to the Q naught, read the value of power, that is P naught. Similarly, the value of H is H naught. Also note down the value of P naught maximum. Okay, so this is the typical characteristic curve for this pump. Note down all the parameters from this graph and you will write them in the table of the results. इस फिगर में आप further देखिए, this is the maximum manometric head reading from the graph and it is also termed as shut off head. हम लोगों ने इसे थ्योरी में डिस्कस किया है, but it is the head which is developed by the centrifugal pump when the delivery valve is completely closed and the pump is in operation. It is the maximum head conducted, sorry, it is the maximum head produced by the pump. तो प्रोसीजर इज क्वाइट सिंपल। इसमें आपने जो वेरिएबल कंट्रोल करना है दैट इज डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज विल बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ द डिलीवरी वाल्व। डिलीवरी वाल्व की ओपनिंग वेरी करते हुए आप बाकी सारे पैरामीटर्स नोट करेंगे विच इंक्लूड the reading on the suction gauge, reading on the delivery gauge, and reading T1 and time T, which is required to fill the tank. So these are your three observations for each uh, valve opening, and then we will fill that table. Okay, now please see the performance of this experiment.
So this is regarding the performance. In your manual, you have to draw figure number 7.1. That is the lab layout of the double stage chemical pump. You have already drawn this in your experiment number 6 as well. But for your reference, I have shown the figure over here. This is the figure which you will draw in your manual, so figure number 7.1. This is the lab layout of the double stage chemical pump. You know, this table number 7.1, the table of observations and calculations. So you can see that ZS, ZD, temperature, gamma, and volume. These are your initial observations. And for this table, you will note down HMS observed, HMD observed, this time T, which is to calculate the discharge, and this time T1, which is giving you this input power. Okay, so this is your table of calculations. Finally, you will plot the statistic curves and you will write down the results in this table number 7.2, which you are getting from the graph. At the end, you can write down the comments on the results that you are getting. This is the data which is given to you for the calculation. So note down the values of ZS, ZT, temperature, and these are the tentative values to fill the table. Please note down that you have to be very careful regarding the unit conversion. Only care which you have to take in the calculations of these readings, that is regarding the unit. Rest of the graph rotation is very easy. Also, please note down that don't join all the points one by one when you are plotting the graph. ये मैंने आपके experiment number 1 और 2 में भी error identify किया था. That don't join all the points one by one. We know the trend, so draw the best fit line which is following that trend line. सारे पॉइंट्स को वन बाय वन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है. Okay, so don't do that. Okay. So this is regarding experiment number 7. तो प्लीज मेक श्योर अभी शेड्यूल ऐसे ही है कि नेक्स्ट वीक से आप लोगों की इवैल्यूएशन है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 4, 6 और 7. ठीक है. तो नेक्स्ट वीक आपकी क्लास का फर्स्ट हाफ वाइवा देगा इन 5 एक्सपेरिमेंट्स का एंड नेक्स्ट वीक second half will give the evaluation for experiment number 1, 2, 4, 6 and 7. तो जब आप लोगों का वाइवा है, मैनुअल्स आप लोगों के चेक होंगे, तब आप लोग आएंगे डिपार्टमेंट फॉर द साइकोमोटर परफॉर्मेंस. ठीक है, तो सिर्फ आप लोगों ने वाइवा ही देना है. रिगार्डिंग टुडेज लैब, अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन. मैम स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये 5 जॉब्स का ना वाइवा कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो आप जो लास्ट 3 है ना 4, 7 और ये 8 इनका वाइवा ले लें, और जो 1 और 2 का उनका वाइवा ऑन कैंपस ही हो जाएगा, बाकी ऑल जॉब्स के साथ ही. Yeah, I'm not getting the voice clearly. Please repeat the question. मैम मैं ये कह रहा था कि जो 3 जॉब्स का वाइवा ले लें, 4, 7 और 8 का, 1 और 2 का ऑन कैंपस ऑल जॉब्स के साथ वाइवा हो जाएगा, क्योंकि उनकी मैनुअल चेकिंग था ऑलरेडी हो चुकी थी. ऑलरेडी मैंने आपसे थोड़ा डिस्कस किया था कि इवैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग था आपकी पूरी की असाइनमेंट चेक होनी है, आप लोगों की सी भी चेक होनी है, आप लोगों ने ओपन एंडेड लैब करनी है सारी, वो जी सबमिट मैम होनी वो है, तो वो सब चेक कुछ होनी है. है, तो ऑन कैंपस एक वाइवा भी तो है ना ऑलरेडी. नहीं, ऑन कैंपस आप लोगों का सिर्फ क्विज होना है, वाइवा नहीं होना. ठीक है, उसमें सर आपका मैनुअल उस्मान ने चेक मेरे होना ख्याल पड़ेगा. कहा था कि शायद कि एक वाइवा ऑनलाइन ऑन कैंपस भी होगा आज उन्होंने जॉब्स मुझे का. गाइड किया है कि इसलिए तो आपका भी वाइवा कंडक्ट कर रहे हैं हम लोग 4, 6 और 8 का. ठीक है, क्योंकि वाइवा नहीं होना. जब आप डिपार्टमेंट आएंगे तो आप लोगों का वाइवा नहीं होना, आप लोगों का सिर्फ एक कॉम्प्रिहेंसिव क्विज होगा. ठीक है, हम लोगों ने इसके अलावा आपके मैनुअल चेक करने हैं, उसके अंदर भी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 चेक नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी चेक हो चुका है. इस वजह से पहले 2 जॉब्स का वाइवा जो मिस है वो हम इसी के साथ कंप्लीट कर रहे हैं. तो आप डिस्कस कर सकते हैं सर से डिस्कशन करने के बाद ही मैंने फाइनल किया. ठीक है, तो जब आप लोग डिपार्टमेंट आएंगे उसमें सिर्फ आपका क्विज होगा क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट है, वी कैन नॉट मैनेज कि सारा जो वाइवा है वो दोबारा हम ले लें. इसलिए पहले 3 जॉब्स का जो सर ने वाइवा लिया है, जो मार्किंग आपकी उसमें हो गई है, वही मार्किंग फाइनल है. इस तरह मेन आपकी वैल्यूएशन यही है जो आपकी 3 जॉब्स की है. 1 और 2 में कुछ डिस्कशन मैंने आपके साथ की हुई है ऑलरेडी, जब मैंने आप लोगों के मैनुअल चेक किए हैं.
तो डोंट टेक मच बर्डन ऑफ दैट। तो आप लोगों ने काम पहले से किया हुआ है, उसको एक दफ़ा बस रिवाइज कर लें। वाइवा में आपसे यही पूछना होता है कि आप लोगों ने काम पहले से किया है और क्यों किया है। तो आपने वो काम ऑलरेडी किया हुआ है, तो इट विल नॉट बी दैट टफ, ठीक है। लेकिन वो वैल्यूएशन में हुई हुई आपकी वाइवे की, दैट इज वाई वी आर कवरिंग इट। वाइवा आपका नहीं होना, जब आप लोगों ने डिपार्टमेंट आना है तो सिर्फ लैब की वैल्यूएशन में आपका लैब मैनुअल चेक होगा और हम लोगों ने कोई प्लान किया हुआ है, हम लोग क्विज लेंगे। वाइवा शेड्यूल में नहीं है। अगर होना होता देन ऑब्वियसली आई विल नॉट बर्डन यू दैट एक मैंने लगाऊंगी, क्या शायद फिर मैं ये भी ना लेती, आप लोग डिपार्टमेंट आके दे देते। तो वाइवा आपका दोबारा नहीं होना, सिर्फ क्विज होना है, ठीक है। तो आई नो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप लोगों ने काम पहले वो किया है, आप लोगों ने कॉपीज बनाई हुई है, 1 और 2 फिर आपने चेक करवाया है, तो उसकी प्रेपरेशन इतनी मुश्किल नहीं होगी आपके लिए, ठीक है। तो मेन फोकस आप रखें अपने 4 पे, इनको कंप्लीट करें, उसके बाद इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें कि आपने इसमें क्या काम किया, ठीक है। तो आई नो दिस इज थोड़ा सा आपके टफ हो गया, लेकिन बच्चे हम लोगों ने भी चीज़ें मैनेज करनी है, एवेल्यूशन आपकी सारी कंप्लीट करनी है, वी डोंट हैव मच टाइम। थोड़ा सा आप साथ फैसिलिटेट करें, कोऑपरेट करें, ताकि काम हम कंप्लीट कर सकें, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आपका? मैम जी जी मैम देखिए, एक्चुअली जो